Hey guys, hello everyone. Very good evening. Very good afternoon to all of you. Just give us a couple of minutes. A few folks are still joining in, and once everyone is in, we will start off with the session. Please be patient. Just hold on for like a couple of minutes. Hey guys, hi everyone. Welcome again. Cool. So we'll start with the session now. But yeah, before we go ahead with that, just wanted to have a quick round of introduction. So let me first brief about myself. My name is Arshan Hassan, and I am one of the co-founders at AlmaBetter. And prior to basically starting off AlmaBetter, I was also a data scientist, and I have like 7+ years of experience as a data scientist. So yeah, well acquainted with how the data science field has evolved in last 7 8 years and how the trends are looking like. So that's like a brief introduction about myself. I see that we have so many people who have already joined in. It will be great if I can have a quick round of introduction on the chat box, guys. Maybe if you can just tell me the city from where you have joined in and what is your preferred mode of communication for this particular masterclass. So I see a lot of you are already putting in some queries. Great. Pankaj from Jaipur. Welcome, Pankaj. Welcome to the session. Pankaj, you were asking, is this song playing in this? Yes, Pankaj, I think this song was something which was deliberate from our end. I hope you liked it. Great. Guys, waiting for others to introduce yourself. Jenny Desai from Surat, English. Okay, Jenny Pankaj, your preferred mode of communication is Hindi. Cool, guys. I think I'll try to keep a sweet balance between English and Hindi. Primarily, the masterclass will be in English, but still, I will try to include uh, Hindi as and where I feel needed. Shankar from Mysore. Great, Shankar. I think Mysore is very near to Bangalore. So I am currently based out of Bangalore, guys, if I missed sharing that information. Akash from Shambhaji Nagar. Welcome, Akash. Welcome to the session. Raghuveer from Delhi. Welcome, Raghuveer. Rahul from Lucknow. Welcome, guys. Welcome, all of you. Jayant from Pune. Okay. Welcome, Jayant. So I think we have a lot of folks joining from multiple parts of India, right? I think that's pretty good. Appu from Shillong. Great, Appu. I think we have someone from Shillong also. Abhay from Gorakhpur, Uttar Pradesh. Welcome, Abhay. Nitin from Bangalore. Nitin and Pachila Anupama from Bangalore. Okay, so we have quite a few folks from Bangalore. Great, guys. Great. I think a lot of people have joined in from different part of the country. In this session, actually, the idea is that I'll try to keep it meaningful and we'll try to essentially have, okay, I think a few more chats coming in. Mritunjay from Jharkhand. Welcome, Ritunjay. Where are you from, Jharkhand? I am also from Ranchi originally, so my hometown is Ranchi. Shivangi from Greater Noida. Welcome, Shivangi. Welcome to the session.
Okay, Pratham from Ajmer. Welcome, Pratham. Great, guys. Great having you all in this session, today's session. So, let me just quickly brief you on what we will essentially be doing in today's session, right? So, as the name suggests, decoding success strategies with AlmaBetter. So, Mrityunjay are from Dhanbad. Great, Mrityunjay. Welcome to the session. Okay, so I think we can begin with thank you all of you for introducing yourself. It feels great to know that so many people from different part of the country come together for a common cause, and I will definitely try to ensure that today you guys learn something out of it, and something meaningful comes out. And whatever trajectory you are potentially exploring, if you are thinking that whether data science is the right field or not, and you're confused about career in data science, so I'll try to give you a neutral and biased perspective on how you should think about things and how you should go about it. This will be a short session, not very long. I'll try to wrap up within 45 to 60 minutes. That's what the plan is, because I know that all of you are having a weekend and probably people want to move out as soon as possible. But never mind. Just stick on with me for next 60 minutes or so. और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 1 घंटे में मैं आपको बहुत ही क्रिस्प तरीके से एनालिसिस दूं कि what is actually happening, right? What is actually happening in the field of data science, what to expect and what not to expect. ठीक है, राहुल from Lucknow. So today's session, as the topic suggests, decoding success strategies with AlmaBetter. So in today's session, we will first explore the industry itself, that how is data science industry evolving, कैसे चीजें प्रोग्रेस हो रही हैं, कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है डेटा साइंस आज के दिन में, हाउ कंपनीज आर अडॉप्टिंग डेटा साइंस एज अ फील्ड, what are the predictions that different organizations, I'll try to give you a perspective of unbiased predictions from proper government organizations on how things are moving across, and what is predicted in next 5 years, 10 years, whether this field will grow, not grow, is it the right time to make a switch in data science, so on and so forth. So we'll try to bring that perspective. उसके बाद essentially I will take you through AlmaBetter's dashboard, and I will explain you that what all things you actually need to do. So AlmaBetter's dashboard is anyways designed to equip modern day data scientists. So we'll take it as a reference, and I will try to explain you guys that what all things, what all technical aspects you need to cover, what kind of projects you need to work on to be able to क्रिएट और स्टार्ट अ सक्सेसफुल करियर इन द डोमेन ऑफ डेटा साइंस. ठीक है, तो हम वो चीज कवर करेंगे. And post that, we will towards the end, we will essentially, I'll brief you guys on the program aspect also. So I assume that a lot of you are here to also understand that what kind of program is happening at AlmaBetter, how is the construct like. तो हम उसको भी cover करेंगे. And then towards the end, I will also give you guys some sample stories around how different people have taken a faith, like leap of faith, to actually start a career in data science and have successfully started that, so that maybe you guys can also get inspired out of it and then try to move things in that direction. Okay. This is a live session. This is not a recorded session. This is live. Today, 16th of March. It's currently 2:15 p.m. And I think a lot of you guys might have queries within the session itself. What I would suggest is that be patient, be with me till the end of the session. And I really hope that I'll try to make this session very insightful to you in all terms. And if you guys stick with me till the end of the session, I hope that you'll get a good perspective on how this field is evolving in general, right? In case if you have any queries which is contextual to the topic that we are discussing, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, अगर उस टॉपिक में आपका कुछ डाउट्स है, कुछ सवाल हैं आपके, तो feel free to put it on chat. Okay, feel free to put it on chat, and I'll essentially pick it up every 10 minutes. So I will go through the session, and every 5 to 10 minutes, I will also be keeping an eye on the chat window itself. So I have a parallel screen open in front of me, wherein I have all the chats, and then essentially we can take it from there. Okay? So that's mostly it, guys, and so we'll start in like another 2 minutes. Just give me 1 minute.
and then we'll start off with the session. Right. Okay, let's begin now. So let me know. Give me a thumbs up, guys, once my screen is visible. Give me a thumbs up, guys, if my screen is visible. Great. So we have Gautam and Sai Kiran also joining in. Welcome, Gautam. Welcome, Sai Kiran, to the session. Okay, so in today's session, we have divided it into five categories. First will be industry insights, wherein we will discuss data science use cases in different industries and how data science as a field is evolving. And then we will have a dashboard walkthrough, wherein I will also be explaining you what all technical aspects, what all skills are required for you to be a data scientist today. Then after we are done with that, I'll also brief you guys on the course structure and fee at AlmaBetter. How are things looking at AlmaBetter, so that you guys are very clear on that front. And towards the end, we'll also discuss stories of some of our alumni, right? So that there are multiple questions that if I have a gap year, if I am from a non-tech background, I'm a fresher or a working professional. So we will try to validate all of those questions by actually showing you some real life stories of people who have become successful, and not very early, right? It's like very recent. So we'll cover that, and towards the end I'll be up for any Q&A session also that you guys would want me to answer to. Okay. So, very first question, right, that almost all of you might be having is why data science? That why should I choose data science as a career? What is it? What is there so much hue and cry about data science today, and why data science? So, 5 years, 7 years ago, right, when you were probably, if I move back to the year 2015 or 2014, probably data science was not a very prominent field. Every company, not even every company, hardly a few MNCs had data science team, that too limited to 2 or 3 people. The products and everything at different companies were having no use case of data science, right? But today the situation has evolved, and it has evolved exponentially. Today, uh, today the thing is that data science is a mandatory thing that every company needs to have, चाहे वो startup हो, चाहे वो MNC हो, चाहे किसी भी डोमेन में ऑपरेट कर रही हो, if it is a company, then definitely data science is something that is very crucial in today's construct. ठीक है. So we'll take some examples, we will take some real life companies, and we will try to understand that how data science as a use case is so closely built now in their ecosystem, and why companies can't separate themselves out from data science as of now, and how is this domain itself evolving, right? Everyone is aware of Apple, that it's such a big company, right? In fact, it's such a big company that if Apple was a country, right, it would have ranked seventh in terms of GDP. Am I audible, guys? I think I got a few messages that there are some audio issues. Give me a thumbs up if I'm audible. Okay, okay. Thank you so much. ठीक है. Great. So let's move ahead. So right, Apple is such a big company. If you if Apple was a country, it would have ranked seventh in terms of GDP. So that is the kind of company Apple is. And do you think that today Apple can operate without a data science team? The answer is no. Apple today won't be able to operate without a data science team. So
We'll see some examples where Apple's data science use cases are such huge and such closely built in the ecosystem that without data science the company can't operate, right? Some basic features, face ID, right, which is like the most basic security feature on all the Apple devices, most of the Apple devices, that is powered by data science itself. There is a convolutional CNN based algorithm, right, a CNN based trained model that is running at the back end to be able to actually recognize your face on the go, right? Today, can you imagine that Apple can go away with face ID technology? Is it possible? No, that's not possible. The only thing that can happen is that Apple will keep on improving on that technology. Handwriting recognition is one such example, right? App library suggestions. You basically open the app store. The recommendations that come for you is very different as compared to recommendations that come from for anyone else, right? So today, can Apple move beyond these use cases? Translate app, right? So Apple currently operates almost in all the countries over the world. There are so many languages, right, in which Apple offers its services. Do you think it is even manually feasible to basically service so many languages without using AI, without using artificial intelligence models, without using NLP based models to facilitate cross language translations, right? So that is how closely the use cases are built in Apple's ecosystem. And today, trust me, you go and ask anyone who is even remotely associated with Apple, right? If he or she is working at Apple at a mid level or a senior level, and if you ask this question that today, is it possible for a company like Apple to operate without the data science team? Then the answer is no. It is not possible. Maybe 10 years ago it was possible. Only software development was needed. You only needed apps, you only needed UI, you only needed hard coded technology, right? That is what software developers were doing. That is what was true 10 years ago, but today it is not, and that's a reality. Okay. Let's see another example. Meta, right? Meta is something that almost all of us are associated with, right? We are using WhatsApp, we are using Facebook, we are using Instagram. Almost all of us spend some part of our daily time into one of the apps, one of the businesses owned by Meta, right? Do you think today it is possible for Meta to come up and say that, hey, I don't want any data science use cases, I can function without a data science team? The answer is no, ये possible ही नहीं है. चाहे आप Instagram पे अगर आप अपने ऐप यूज कर रहे हो, you're scrolling through the posts, you're scrolling through the reels, all of that is personalized data. All of that is actually coming from a backend machine learning algorithm that powers it. There are huge recommendation engines working behind. So you can say that 90% of Meta's revenue comes from ads, right? And ads itself are personalized to our behavior, our search history, what are the things that we are seeing, we are doing, and that is the kind of personalization they have done. So it means that a company as big as Meta has their 90-95% revenue dependent on data science use cases, right? So that's the power of data science, and it's only improving. Meta was one of the earliest companies to adopt data science use cases, and that's why today it is like very, very big, right? Today it is making billions of dollars just by showing you the right ads at the right time. So news and ad feed for personalization. This is one of the basic use cases, and this is the fundamental core business model of the company. Okay, it's not even an auxiliary use case कि हाँ ठीक है, कुछ तो डेटा साइंस की टीम है यहाँ पे काम होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो चलेगा. No, that's not the case. It is the core business model. Recommendation engine is the core of Meta, core of Facebook, core of Instagram. If that goes out, the platform goes away, right? So the only thing that will happen is that data science teams will only increase in these cases. Image and video recognition, right? You Meta uses advanced image and object recognition models to be able to attribute the right kind of videos to you, right? So depending on your emotional status, right, if you are kind of liking happy videos, so it will suggest you similar videos. And how does it identify those similar videos? By actually doing object recognition, image recognition on those videos, sentiment analysis on those videos, and then recommending you the right kind of videos that resonate with your sentiment, right?
Language translation, another use case. Meta, again, like Apple, is present almost in all the countries globally, right? So, in order to basically service such a huge population with such varying demand, right, with such varying demand of languages, right, within India itself, there are at least 15 languages in which Meta provides its services. Do you think it is physically possible for Meta to set up a manual translator team to be able to service this entire content when the content is getting generated at such a fast pace, right? Every minute, volumes, GBs of data gets uploaded on Facebook and Instagram. It is not possible to manually do that, right? It has to be very right data science teams, very good performing NLP models, right, which works in the backend to do that heavy task. क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप रियल टाइम पे जब करोड़ों लोग इतना डेटा जनरेट कर रहे हैं तो आप हर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में सर्विस कर पाओ without having any automated system in place, right? And what is that automated system? That is nothing but NLP models, which is nothing but a data science use case, which is something that data scientists will learn, right? If you guys today happen to study at AlmaBetter, this is something that you guys will also learn, right? And the only thing is that this will only keep on improving. The accuracy of the models will only keep on going up, right? The language translation accuracy will keep on getting better and better. More and more languages will keep on getting covered. So data science use case at Meta is only going to increase, right? And with time, it has become more centric to their core revenue also. It is gone are the days that बिना डेटा साइंस टीम के भी लोग ऑपरेट कर पाते थे. अब नहीं हो सकती वो चीजें. अब like Meta is a business that is heavily dependent, or I would say totally dependent on data science, right? And this is something that I'm not making up or trying to say on my own. अब खुद एक बार rationally सोचो, क्या है Facebook का प्रोडक्ट, क्या है Instagram का प्रोडक्ट? It's nothing but the right set of feed, the right set of ads, the right set of reels that you see, right? If that essence itself goes out, if you start seeing reels that are not contextual to you, you will stop using the platform, right? And if you stop using the platform, their revenue go out. As simple as that. So that is the whole point on trying to explain you that why it is so important. Google Photos, right? Google Photos may there are image recognition models, object recognition models, AI recommendation models that are built in and powering the entire product, right? Google Translate, another app which helps in translating one language to other. Then there are speech to text models, right? You speak something and the text appears. You must have seen it, right? These are nothing but data science trade models, right, that are working at the back end, right? And डेटा साइंटिस्ट essentially do this. उन्हें मतलब different models train करने पड़ते हैं, speech to text models train करने पड़ते हैं, and that is what Google is also doing, right? Google Ads, recommendation engine, right? You see the ads that are contextual to you. Google Search, right? Google Search is like one of their biggest product. In fact, the beauty about Google is that almost all their product, in fact, I would say 100% of their product has some or other data science use cases built. So today, can Google operate without a data science team? Can they say that I will not have any data science use case, I will not have a data science team? No, that is not possible, because everything that they are doing is currently pivoted around data science, राइट? इसके अलावा अगर हम थोड़े ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के एग्जांपल लेते हैं, Amazon, Myntra, Flipkart, Meesho, राइट? हाउ आर दीज गाइज यूजिंग? चलो, वी डिस्कस्ड एप्पल, मेटा, गूगल. आई थिंक दीज आर बिग नेम्स, बट लेट्स talk about Indian hyper local companies also. So maybe Amazon also falls in that elite list of companies, but Myntra, Flipkart, Meesho, these are Indian companies, right? Do you think that they can run their businesses today without data science team? 5 years ago, 2015 की मैं बात करूं तो शायद ट्रू इट वाज पॉसिबल कि मुझे डेटा साइंस नहीं चाहिए. क्यों ही चाहिए? मैं अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करूंगा, पीपल विल कम, इफ दे लाइक इट दे विल बाय इट, एंड देन दैट्स हाउ द बिजनेस विल गो ऑन. That is what people were doing in 2010, 2012. It was a fixed set of products. But today, that is not going to happen. That is not going to make you successful, right? Because now the companies have evolved in a manner that the products that you are seeing on their homepage, for example, if I go and open amazon.in today, the products that I will see on the homepage will be different for each and every person. And trust me, for each and every person, it will be different for you, it will be different for your sister, it will be different for your brother, right? It is optimized at that level.
So forget that no two people today will have the exact same product being presented on their screen, right? That is how it is going to be, right? And why is it happening? Because it is powered by recommendation engines. It is nothing but product recommendation engines that analyze customer behavior, browsing history, purchase history to give you personalized product recommendations. Today if you go and open a startup, right, an e-commerce startup, and you are not able to do product recommendations, right, you will not be able to succeed in the market. Today if Myntra says that I will not use data science, I will show the products that I have irrespective of the user behavior, then users will start dropping off from their platform. Their revenue will dip within a matter of months. The company will go bankrupt within like 30 to 40 days. That's it. That's how essential it is in today's context, right? So that's why these teams are also working on improving their product. They are adding better recommendation model. There are teams working on improving the existing recommendation model, so on and so forth, right? Fraud detection, right? With so many people actually on the platform, who is doing fraud, which seller is fraud, which seller is right? So basically a lot of fraud detection models which automatically assess people and try to give you a perspective on what is right, what is wrong. Supply chain optimization, right? Chatbot development. Essentially you go to customer support and you essentially start uh, putting your queries, and there is a bot replying to you. What is that? That is nothing but an NLP or a GPT based bot that is talking to you, right? You personalize that, you essentially make it personal to your use case, and that is what is needed. ठीक है. Image and voice recognition to power image and voice based searches. So today if you go to Amazon, you there gone are the days, right? 5 years ago अगर आप किसी भी e-commerce website पे जाते और अगर आपको कुछ सर्च करना, for example if you want to buy a t-shirt, you will type t-shirt and then search. But that used to be 5 years before. Now more things have come in. अब आपको अगर टी शर्ट सर्च करना है तो आप बस बोल दो दैट रेड टी शर्ट्स फॉर मी, दैट्स इट, right? It can essentially process your voice into text. What is that? A speech to text model, right? Basic use cases which we even miss, right? You click an image, right? You click an image and Flipkart shows you similar t-shirts. What is that? That is an object recognition model working in the backend. So subtle features, every small feature that you see in all these apps are nothing but data science models working in the backend and doing the heavy job for you. As simple as that, right? Are you guys with me on this till now? Does this make sense? Give me a thumbs up if I'm audible and things look clear to you. Great. So before, just give me 1 minute, guys, before we continue. I think we have a few more use cases that we'll discuss about. Right. Let's continue, guys. So, can you confirm if the screen that is visible to you right now is on e-commerce, right? Because I see my parallel screen is somehow showing some other screen. Give me a thumbs up if the screen that you see on your systems right now is having Amazon, Myntra, Flipkart, and Misho's logo. Okay, okay. So I think then probably the lag is only at my end. ठीक है, we'll continue then. Great. अगला एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी टेक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एज एन एग्जांपल, राइट? Netflix, Sony Live, Hotstar, Prime, right? Do you think that these OTT platforms today can operate without data science use cases? The answer is no, that they will not be able to operate, right? Content recommendation. So again, the same recommendation model तो इतना basic हो चुका है, recommendation engines तो इतने basic हो चुके हैं कि कोई भी ऐप हो, चाहे वो food हो, चाहे वो
OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो एक सिंपल प्ले स्टोर हो, चाहे वो ऐप स्टोर हो, कोई भी चीज़ हो जहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, किसी भी आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो जहाँ पे यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? रिकमेंडेशन मॉडल्स आर लाइक core to every business these days, right? Content recommendation, food recommendation, right? Insurance recommendation, all of this is now very personalized. Netflix पे मैं जो देख रहा हूँ, मुझे क्या recommendation आ रहे हैं, that is very different as compared to what is coming to you, right? Auto generated thumbnails, right? Now this is a classic example that how Netflix is moving beyond the conventional concepts of data science and trying to apply it across different use cases, right? तो ऑटो जनरेटेड थंबनेल्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ मूवी स्टारिंग बोथ सलमान एज वेल एज शाहरुख, राइट? एंड नाउ द आइडिया इज दैट now, suppose I'm a person who is more interested in Shah Rukh movies. I have watched a lot of Shah Rukh movies. So what Netflix will do is it will create multiple thumbnails. Thumbnail क्या होता है? वो poster image of any movie. तो एक शाहरुख बेस्ड इमेज रहेगा, दो तीन सलमान बेस्ड इमेज रहेंगे, दो तीन शाहरुख बेस्ड इमेज रहेंगे, एंड डिपेंडिंग ऑन माई लाइक, राइट, ऑन माई प्रेफरेंस टू विच एक्टर आई हैव प्रेफर्ड हिस्टोरिकली, इट विल एसेंशियली शो मी that this is the thumbnail for this movie, so that my propensity to click and watch that movie increases. Why? Because I am more of a SRK fan as compared to a Salman fan. Just giving an example, random examples of how data science use cases are being used on things as small as optimizing the thumbnails, optimizing the posters. तो किसी भी एक मूवी का अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाओगे टुडे, like after this session, try and go to Netflix and try to see that whether everyone, like all of us, whether do we see the same poster for each movie? The answer is no. The poster that I might be seeing will be different from the poster that you might be seeing, and that is again custom tailored to our history, our behavior, so on and so forth, right? सबटाइटल जनरेशन, इतने सारे मूवीज बन रहे, इतने सारे सबटाइटल्स लिखना विल बी सच अ ट्रेमेंडस टास्क, राइट? तो यहाँ पे डिप्लॉयड है स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल्स, राइट? देयर आर state of the art speech to text models, which is again nothing but data science based model, right? That translates your speech, right? So translates the video's speech to text, right? And then there are people essentially working on just fine tuning the subtitle and posting it out there. So today, can Netflix, can Hotstar, can Prime Video go away with these use cases, right? If they go away with these use cases, the cost of subtitle generation will become so high that they will no longer be competitive in the market, right? The content recommendation needs to be so good, and they need to continuously improve it, because अगर वो मुझे सही कंटेंट रिकमेंड करेंगे तभी तो मैं देखूंगा ना, तभी तो आई विल पे फॉर द सर्विस. सो everything is so their revenue, right? How, what is their revenue? OTT प्लेटफॉर्म का तो रेवेन्यू यही होता है, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं. सब्सक्राइब लोग कब करेंगे? जब they are getting the right content to watch, they're liking the content. So that's why content recommendation is now core to revenue. Gone are the days that it was an optional thing कि अगर सही कर भी रहे नहीं भी कर रहे हैं, अब उससे फर्क नहीं पड़ता है. All the use cases that I discussed till now, all of them are directly correlated to revenue now, right? Without these use cases, without data science teams, it is not going to function. And that is why data scientists today are very much deeper integrated in the system. They are directly interacting with business teams, they're directly interacting with the leadership team, and a lot of business use cases are getting directly pivoted by डेटा साइंस टीम्स इटसेल्फ. तो पहले, अभी से 8 साल 10 साल पहले प्रोबेबली ऐसा था कि डेटा साइंस टीम वाज डूइंग ओन R&D एंड प्रोबेबली दे वर नॉट वेरी मच इनटू द कोर function, and they were more treated like an auxiliary function which is doing R&D and building some use cases. But today every business is heavily dependent, and in fact revenue of businesses are dependent on data science teams itself. So they are closely interacting with product teams, program managers, business teams, supply chain teams, and that is the kind of interaction that all of them are having all across. As simple as that. ठीक है? फूड टेक की एग्जांपल ले ले, स्विगी जोमेटो, द फूड रिकमेंडेशंस दैट आई सी, नो मैटर इवन इफ, सो आई थिंक एक तो लोकेशन बेस्ड फिल्टर होता ही है कि इफ आई एम इन बैंगलोर एंड इफ आई एम इन वन लोकेशन आई विल बी सीइंग रेस्टोरेंट्स अराउंड मी. बट इवन इफ आई हैव अ रूममेट हु इज exactly sitting beside me and doing
food searches, the kind of recommendations that he will see on Swiggy and Zomato will vary, right? Customer chatbot support, राइट, इन फिनटेक, राइट, इन फिनटेक अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अभी से पहले अगर आपको लोन लेना होता था तो देयर वाज होल लॉट ऑफ प्रोसेस वर्क, राइट, दैट यू हैव टू apply for the loan, fill up the paper, then there will be verification check, and the entire process was time consuming. It used to take more than 7 days, 8 days for the processing to even start. बट अभी देर आर एप्स, राइट, जहां पे आपका लोन प्रोसेसिंग विद इन सेकंड्स हो जा रहा है. कैसे हो रहा है? देर इज नॉट अ मैनुअल पर्सन सिटिंग बिहाइंड एंड रीडिंग दैट डेटा realistically, right? It is underwriting models. What are underwriting models? They are essentially models that take in your transaction data, your SMS history, right? What is your previous loan history, and all of that data is fetched in real time, and there is a model trained, right, which essentially figures out that you are eligible for this loan or not. And all of this happen within a fact of seconds, okay, like within 8 to 10 seconds. So today, if there is a fintech startup that is going to start and say that I will not have a data science team, trust me, it won't be able to function, it won't be able to even exist. So that is how important data science use cases across all these industries are today. So this was just to give you an example of why data science today is so correlated to revenue and how the importance of data science has evolved over time. It used to be a periphery, it used to be an auxiliary thing 10 years ago, but today it is the mainstream thing. ठीक है, आज हो सकता है कि लोग मार्केटिंग टीम ना रखें, चल जाएगा एक बार के लिए काम उनका, लेकिन डेटा साइंस टीम ना रखें, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. As simple as that. I am putting it in a very blunt way, but this is the harsh reality. ठीक है, अब हम अगली, सो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स टिल नाउ? Are you guys on with me? Give me a thumbs up if you guys are here with me till now. ठीक है, let's move ahead. Now I will try to give you guys an unbiased outlook, right? ठीक है, someone is saying question posted. Sanjay is asking, how can a person having experience more than 1 year on medical coding have good knowledge in healthcare field can use that knowledge along with data science? So Sanjay, I think I'll tell you a alumni story. So this guy was a dentist. He was working as a dentist for last 8 years, and then he wanted to essentially move to data science field, right? So he joined us. He completed our master's degree program, and then he essentially got placed as a data scientist at a healthcare firm. And in fact, that healthcare firm preferred him as compared to other candidates who were better than him. Why? Because this guy had a domain knowledge. So going forward, data science with domain knowledge will become a niche. For example, if you're a finance guy and you know data science, you will be a niche for fintech companies. If you're an operations guy and you know data science, you will be a niche for e-commerce companies. So that is how the field is evolving in this way. So the beauty of data science is that whichever domain you are coming from, that helps you bring that niche onto whatever things you're doing. Because क्या होता है ना, जब आप एज अ डेटा साइंटिस्ट काम करते हो तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द टेक्निकलिटीज कि मुझे मतलब डेटा पे काम करने आना चाहिए, मॉडलिंग करने आनी चाहिए. दैट इज वन पार्ट, दैट इज टेक्निकल एस्पेक्ट इज रिक्वायर्ड. बट कहीं ना कहीं उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए कि यहाँ पे कस्टमर्स को क्या चाहिए होता है, किस टाइप के रिकमेंडेशन इंजन आप बिल्ड कर सकते हो. तो वो वाली अंडरस्टैंडिंग इज अगेन वेरी नीच टू द डोमेन. तो अगर वो आपका अगर डोमेन का एक बेनिफिट होता है तो दैट इवेंचुअली हेल्प्स इन द लॉन्ग रन. So don't worry, that will be a positive thing only. Neetu is asking what is difference between data science and data analytics. तो नीतू डेटा एनालिटिक्स में ठीक है. आई थिंक लेट्स पार्क दिस क्वेश्चन व्हेन आई एसेंशियली मूव यू गाइस थ्रू दी करिकुलम, राइट. तो फिर मैं आप लोगों को ब्रीफली बताऊंगा कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या टेक्निकल चीजें चाहिए होती हैं to be able to be a data scientist or a data analytics. तो वो difference काफी clear हो जाएगा. So need to hold on for like another 10-15 minutes and then we will move to that section. ठीक है.
अब हम अगले 10 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अगले 10 मिनट में हम समझने की कोशिश करेंगे। शंकर इज आस्किंग डेटा साइंस एंड सप्लाई चेन। डेटा साइंस एंड सप्लाई चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। सो फॉर एग्जांपल डिमांड प्रेडिक्शन, राइट? सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डिमांड प्रेडिक्ट करना इफेक्टिवली, कि इस एरिया में कितना डिमांड आएगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। अगर वो चीज आप एक्यूरेटली कर पा रहे हो, तो अभी तक वो सब चीजें रैशनली होती थी कि लोग कहते थे कि मुझे लगता है इतना होगा एंड दैट इज इट। But all of that is now very data driven. We collect actual data points of user behavior, consumer behavior, app experience, and basis that we try to predict that what will be the total demand in one area. और अगर आप डिमांड प्रेडिक्शन की एफिकेसी अगर 1% से भी इंप्रूव कर रहे हो ना, तो द अल्टीमेट कॉस्ट इंप्रूवमेंट दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. So that is how data science use cases can be replicated on supply chain aspect as well. I hope that answers the question. ओके, लेट्स मूव ऑन टू गवर्नमेंट आउटलुक. तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को एक अनबायस्ड आउटलुक दूं कि हाउ गवर्नमेंट बॉडीज आर प्रेडिक्टिंग दैट डेटा साइंस फील्ड विल इवॉल्व इन द लॉन्ग रन. सो अ लॉट ऑफ यू माइट हैव हर्ड कि हाँ डेटा साइंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ऐसी चीजें होंगी. And a lot of you might see articles also being posted from different companies, different edtech companies, right? That this is going to happen, that is going to happen. But today we will skip all of that. We understand that there is an inherent biasness that companies or private companies will do for themselves, right? And they will try to show that yes, data science is a growing field, so that more and more people take their courses, so on and so forth. But today I'll not do any of that. In fact, I would say that don't believe any such article that is privately owned. Go for data that is unbiased. Go for data that is coming from government resources. ठीक है, तो आज हम दो आउटलुक्स डिस्कस करेंगे एंड फॉर बोथ ऑफ देम आई हैव टेकन रेफरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. द फर्स्ट वन इज IBEF, which is India Brand Equity Foundation. So what is IBEF? पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ. You guys can also go to ibef.org. ठीक है, about us. Uh, is my screen visible, guys? Can you guys see the IBEF page? Give me a thumbs up if it is visible. ठीक है. So what is IBF? IBF is a trust established by Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. ठीक है, तो Government of India backed trust है ये. ठीक है, IBF is knowledge center for global investors, international policy makers, and world media seeking updated, accurate, and comprehensive information on the Indian economy, states and sectors. ठीक है, आप लोग जाकर के IBF के बारे में पढ़ सकते हो यहाँ पे. Just go to ibef.org. This is a government website. You can go and read about it. But this is like the broad idea that IBF what it is, right? कि क्या करता है IBF. अब हम आते हैं कि IBF ने क्या प्रेडिक्शन कर रखा है. ठीक है, so there is an article which has been published in the research section of ibf.org, future of data science and AI in India. ठीक है, मई 2023 का आर्टिकल है. सो विच इज वेरी अपडेटेड. सो इट इज नॉट इवन अ ईयर, 7-8 months ओल्ड आर्टिकल है. सो I would suggest, so I'm also putting this link on the chat section. Okay, let me know guys if you can see the article now. Is the article visible? Future of data science and AI in India. Give me a thumbs up if it is visible. Right. So this is the article. I hope it is visible to you guys. Yes. Okay. Future of data science and AI in India. So go through this article. I'm also sharing this link on chat so that if you guys want to have a read through it, have a read through it, and you guys will essentially understand that what is the prediction that these guys are making. So if you read through it, it says that the market of AI is expected to reach US $7.8 billion by 2025 in India, right? According to the State of the Education report, AI will grow at a rate of 20.2% CAGR, which is very good, guys, as compared to any other industry.
ठीक है. It talks a whole lot of things, a whole lot of data points, so I'm not going through all the details in the interest of time, but the broader idea is that don't just follow blindly organizations or private companies that post articles on their behalf. Go for unbiased data, go for data that is coming from government backed sources, and you'll be able to make a better call and get a better understanding of how this field is evolving and whether data science is the right career field for you or not. ठीक है. तो ये तो हो गई इंडियन आउटलुक की बात. नाउ दिस इज व्हाट द इंडियन आउटलुक सेज. नाउ इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल आउटलुक, राइट? So if I just quickly cover global. So for global outlook, we will be taking US Bureau of Labor Statistics. Okay, I'll show you the site also. Let me know, guys, if it is visible, if you can see the site, right? US Bureau of Labor Statistics. Okay. So this is an official website of the United States government, and this is their prediction on how the global job outlook for data scientists will look like. ठीक है. इस पेज का भी लिंक मैं आप लोगों को चैट में डाल दे रहा हूं टू गेट अ ग्लोबल आउटलुक ऑल्सो. So यहाँ पे आप देखोगे that the job outlook says that this data scientist as a field is growing at a rate of 35%, which is much faster than the average. If you go to job outlook over here, so if you go to job outlook over here, you can see the predictions that US Bureau of Labor Statistics is making. It is saying that all occupations will grow at a rate of 3% in next 10 years. Mathematical science occupations, right? This will grow at a rate of 29%, and data scientists will grow at a rate of 35%, right? So in mathematical science occupations, it means other occupations like such as software developers and so profile. They will essentially grow at 29%, and data scientists will grow at 35%, which is higher, like one of the most highest growing career profiles, right? So these are the two snapshots that I wanted you guys to have a look at from a perspective of how the market itself is growing and what are government organizations talking about it. Some of you are having probably connectivity issue. ठीक है. Let me know if my screen is visible, guys. Give me a thumbs up. Okay, ठीक है. We'll move ahead. So this is what I wanted you guys to have a perspective about, that how the government outlook and the Indian and global outlook in regards to government agencies. To feel free to go and have a look at them so that you guys can understand better. Now in next section, what we will do is we will essentially try to get an understanding of. So we will do a dashboard walkthrough, and in the context we will also discuss that what all technical skill sets are required today for you to be a successful data scientist. Okay. Right. So just give me 1 minute. I am sharing my screen again so that I can take you guys through the dashboard also. Right. Let me know once my dashboard is visible. Give me a thumbs up, guys. ठीक है. So this is the dashboard of AlmaBetter's data science course, certification in full stack data science course. So I'm currently enrolled as a learner in this particular course, and hence the view for me might slightly be different as compared to you because I'm an enrolled learner. I have been enrolled in a particular cohort. ठीक है. So first, I will brief you on the curriculum itself. Okay. So there is a Learn tab, right? Once you go into the Learn tab and you click on Continue Learning,
you see the entire curriculum for data science, right? So this is a 6 month course that is divided into 7 modules, right? So what is the first module? The first module is introduction to computer programming, right? In this module, you will essentially learn about Python, different concepts around Python, so on and so forth, right? And if I and in the second module, it is about numerical programming in Python, in which essentially you will learn about DSA, data wrangling libraries like NumPy, Pandas, right? Data visualization libraries, Matplotlib, Seaborn, all of those things. This is module 2. Module 3 is relational databases, right? Which is essentially everything about SQL, how to maintain databases, how to write SQL queries, so on and so forth. So everything around SQL, right? So you are data scientist, you are working on data. Data is something that is stored on databases. So having an understanding about databases, how to run operations on databases, how to use SQL becomes fundamental to data scientists. So that is how module 3 will look like. So module 1 and 2 will mostly be around Python and libraries for data wrangling using Python. Module 3 will be your relational databases, which will talk about SQL, so on and so forth. Module 4 will be data visualization tools, in which you will learn Excel, Tableau. You will also learn a lot of libraries around data visualization. Okay? This will be module 4. मॉड्यूल 5 विल बी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, जहां पे आप बेसिक स्टैटिस्टिक्स सीखोगे, लाइक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, concept of confidence interval, hypothesis testing, experiment design, so on and so forth, right? Probabilities के बारे में आप सीखोगे, different type of distributions के बारे में आप सीखोगे, what is normal distribution, what is Gaussian distribution, so on and so forth. So you'll get a brief about statistics. Now, why is statistics required? Because it helps convey meaning to data, right? It helps uh, you essentially convey meaning to whatever data you're doing. मॉड्यूल 6 इज लाइक इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जहां पे आपके मशीन लर्निंग कोर चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, वेर यू विल एसेंशियली बी लर्निंग अबाउट रिग्रेशन मॉडल्स, क्लासिफिकेशन मॉडल्स, डिसीजन ट्रीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर यहाँ पे आप मॉडल्स ट्रेन करोगे and things like that, right? You will actually be working on different modeling techniques, कैसे मॉडल ट्रेन करते हैं, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ क्या होता है, so on and so forth. And the last module is career guidance, जहां पे बेसिकली आपका रेज्यूमे बनाने के अराउंड एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स के अराउंड सिखाया जाएगा. जस्ट गिव मी 1 minute गाइस, जस्ट गिव मी 1 minute. Right. So continuing, so this is how different modules will look like. तो ये 7 modules हैं. अब ये modules के अंदर चीजें कैसे दिखती हैं हम उस पे आएंगे, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू आंसर नीतू विश्वास क्वेश्चन. ठीक है. तो अब मैं आपको ये स्लाइड जो दिखा रहा हूँ, सो दिस इज व्हाट एसेंशियली डिफरेंशिएट्स डिफरेंट रोल्स. ठीक है. तो मैंने आपको 7 मॉड्यूल्स दिखाए वहां पे. प्रोग्रामिंग स्किल्स, which is like module 1 and module 2, relational databases, which is like module 3, data visualization, which is like module 4, and statistics for ML, which was module 5. ठीक है. तो ये जो शुरुआत के 5 मॉड्यूल्स थे, मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 5 तक, अगर आप टेक्निकली इन मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर ले रहे हो, राइट, देन यू आर ओके टू स्टार्ट एज अ डेटा एनालिस्ट. ओके. And module 6, which was introduction to machine learning, if you are covering this as well, then you are essentially ready for entry level data scientist roles. ठीक है. So Neetu, I hope this answers the question that what is the difference between data analyst and data scientist. So data analyst is like a subset of a data scientist. ठीक है. उसके बाद और 3 चीजें होती हैं.
एडवांस्ड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एमएल ऑप्स, ये 3 चीजें होती हैं। अगर आप ये 3 चीज भी कर ले रहे हो तो आप एडवांस डेटा साइंस रोल्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। And that would mean that you can apply for top product companies, you can look up for a long term career in data science, आप अगला 10 साल अपना career projection देख सकते हो। In 1 or 2 years you can switch in companies like Google, Amazon, so on and so forth। ठीक है, तो ये जो 3 एडवांस चीजें हैं वो आपको मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में मिलती हैं। सो इफ आई गो टू द मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, तो फाउंडेशन ट्रैक तो सेम रहता है, बट इन द स्पेशलाइजेशन ट्रैक इन मास्टर्स डिग्री यू सी दोज 3 एडवांस थिंग, ये जो चीजें मैंने बताई, एडवांस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एमएल ऑप्स। ठीक है, वो आप यहां देखते हो। प्रोडक्शनाइजेशन ऑफ एमएल सिस्टम्स, एडवांस मशीन लर्निंग जहाँ पे आप CNN, RNN, टाइम सीरीज एनालिसिस, डीप लर्निंग, इन सब चीज़ों पे काम करते हो, राइट। इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग जहाँ पे आप कंप्यूटर विजन फंडामेंटल्स, जो कि अभी सारे यूज केसेस हमने डिस्कस किए, एप्पल का फेस आईडी रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, NLP फंडामेंटल्स जहाँ पे आपने ट्रांसलेशन मॉडल्स एंड ऑल ऑफ दोज हैवी एडवांस्ड यूज केसेस। सो वो जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली आपके एडवांस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एमएल ऑप्स में आते हो। तो आपने ये बेसिक कर लिया तो यू आर रेडी फॉर अ जॉब, यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ डेटा साइंटिस्ट, राइट। बट इफ यू वांट टू आल्सो ग्रो एज अ डेटा साइंटिस्ट, देन आई वुड सजेस्ट दैट आपको एडवांस्ड एमएल, डीप लर्निंग और एमएल ऑप्स भी आना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट if you want to start your career as a data analyst, then first 5 modules are good enough। ठीक है, if you want to also have a data science वाला career path, then first 6 modules are good enough। If you want to grow in this field in the long run, in next 5 years, 10 years, then you should also have advanced level knowledges as well। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विल कम बैक टू द कोर्स इटसेल्फ, और फिर मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप क्या कैसे दिखता है। सो अगर मैं किसी भी एक कोर्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, इफ आई टेक फॉर एग्जांपल गेटिंग स्टार्टेड विद पांडास एंड नंपाई, तो आपका बेसिकली कोर्स कैसा दिखेगा, मतलब बेसिकली ये जो लेक्चर्स हैं ये सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। हम लाइव लेक्चर्स पे आएंगे अभी, वी विल टॉक कि क्लासरूम में कैसे लेक्चर्स होते हैं, बट जो यहाँ पे मैं चीजें आपको दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे जो सारी चीजें लिस्टेड है, दीज आर ऑल fine tuned recorded lectures that have been added for self study also, that in case you want to do self study, that doesn't mean that live classes नहीं होंगे, live classes होंगे, अगला चीज मैं उसके बारे में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहले आपका बेसिक पूरा आपका कंटेंट रहता है जो आपको पढ़ना है। देन देयर इज अ लेक्चर व्हिच इज लाइक अ रिकॉर्डेड लेक्चर, जहाँ पे आप सारा रिकॉर्डिंग देख सकते हो। एंड दीज आर आवर बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स हु हैव रिकॉर्डेड दिस एंड विल एक्सप्लेन यू द एंटायर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप ये लेक्चर पढ़ने के बाद फिर आप उसी लेक्चर के अराउंड क्विज जो है वो ले सकते हो। ठीक है, एंड देयर आर एडिशनल रिसोर्सेस एज वेल, राइट, कि आपको कुछ एडिशनल चीजें जो बताई गई है उनके बारे में पढ़ना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, a lot of lectures also have practice problems। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी एडेड रहते हैं। सो द आइडिया इज दैट आप हर एक लेक्चर के बाद उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखोगे, कैसी चीजें होती हैं, व्हाट ऑल थिंग्स हैपन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। Samir, yes, ML ops means machine learning operations। That is essentially that अगर आप कोई बड़ा मॉडल बनाते हो, आप क्रिएट करते हो, तो उसे आप डिप्लॉय कैसे करोगे प्रोड में। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक का लैंग्वेज ट्रांसलेशन मॉडल है, राइट, तो मॉडल ट्रेन करना तो चलो आपने कर लिया ट्रेन, बट उसको स्केल करना और उसको बिलियंस ऑफ लोगों के लिए यूजेबल बनाना, कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ millions of people are requesting for the same API, right, कि इसको इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो उतना डेटा, उतना स्केल हैंडल करना, सो फॉर दैट ML ops इज रिक्वायर्ड। आई होप दैट गिव्स अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ ML ops। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक मॉड्यूल के बाद, राइट, हर एक लेसन के बाद इनफैक्ट आपके प्रैक्टिस असेसमेंट्स होते हैं, कोडिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड ये पूरा लेक्चर्स जो है, ये सारे लेक्चर्स वेल स्ट्रक्चर्ड है एंड ऑर्डर में लिखे हुए हैं। हर एक मॉड्यूल के बाद तो आप देखोगे तो हर एक मॉड्यूल के बाद एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता है,
ओके, सो व्हाट इज कैपस्टोन प्रोजेक्ट? तो आपने मॉड्यूल में जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया, राइट, फॉर एग्जांपल आपने रिलेशनल डेटाबेसेस का मॉड्यूल खत्म कर लिया, या फिर लेट्स अज्यूम कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 खत्म कर लिया है, तो मॉड्यूल 2 खत्म करके मॉड्यूल 3 में जाने से पहले आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करोगे, राइट, जिसमें रियल वर्ल्ड डेटा सेट होता है, फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी का डेटा होता है, जिसके वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं कि आपको क्या करना है। तो आपने जो पढ़ाई की उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, एंड ये जो इंप्लीमेंट किया इस चीज को फिर आप अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हो, राइट, एंड यू कैन basically put it up as a proper project because this project is coming from a legit company. This is an Airbnb project जहां पे आपको डेटा सेट दिया जाता है, बताया जाता है कि क्या करना है, सैम्पल प्रेजेंटेशन वीडियोस होते हैं। तो यू विल सी दैट दिस वीडियो दैट इज करेंटली विजिबल ऑन माय स्क्रीन इज वन स्टूडेंट प्रेजेंटिंग हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसा हम क्यों कराते हैं? बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर्सपेक्टिव। जब आप इंटरव्यूअर को जाके एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हो, तो आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करो। तो एक ये हर मॉड्यूल के बाद आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट करना पड़ता है, एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट, राइट? सो दैट इज हाउ डिटेल्ड एंड एनग्रॉसिंग द करिकुलम इट इज. It's not only about the videos, it's about the videos, the assessments, the quizzes, the projects, the capstone projects, presentation, evaluations, and everything. So a lot of people compare and say कि कोर्स क्यों ही लेना है, हम तो यूट्यूब पे भी जाके वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल, you can watch the video. In fact, you just ping me personally, I will give you download of all these videos free of cost. It is not the video that you are essentially paying for. It is the entire package. It is an entire learning ecosystem that you guys are actually opting for, right? So that is how the perspective is. सो ये हो गई लर्न टैब की बात। यहाँ पे आप ये सारी चीजें देख सकते हो, सारे मॉड्यूल्स लिस्टेड होते हैं, आपका प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली अपग्रेड होता रहता है कि आपका प्रोग्रेस क्या चल रहा है। आप जो जो चीज प्रोग्रेस करते जाते हो वो बुकमार्क होता जाता है, सो दैट यू कैन ट्रैक एंड मॉनिटर योर प्रोग्रेस अकॉर्डिंगली। अब आते हैं लाइव क्लासेस पे। ठीक है, तो अब लाइव क्लासेस पे आते हैं। तो यहाँ पे आपके बेसिकली जितने भी क्लासेस शेड्यूल्ड होंगे, आप जिस भी बैच में ज्वाइन करोगे, फॉर एग्जांपल आई एम पार्ट ऑफ वन ऑफ द रीसेंट बैचेस, तो मुझे मेरा अगला क्लास दिख रहा है कि 2 days लेटर माय नेक्स्ट क्लास इज ऑन कंडीशनल एंड इनफाइनाइट लूपिंग। ठीक है, उसके बाद फिर कस्टम फंक्शंस इन पाइथन पे एक लाइव क्लास है, फिर एडवांस्ड लूपिंग कॉन्सेप्ट्स पे एक क्लास है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये सब क्लासेस मेरे कवर हो चुके हैं। दीज आर द क्लासेस दैट आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड फ्रॉम माई एंड। ठीक है, और एक बार क्लासेस खत्म हो जाते हैं तो मैं उनके रिकॉर्डिंग्स भी देख सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ लाइव क्लास बट आई वाज नॉट एबल टू अटेंड इट, तो आई कैन गो एंड व्यू द रिकॉर्डिंग ऑल्सो कि उस क्लास में क्या पढ़ाई हुई थी। एज सुन एज दी जैसे ही क्लास खत्म होता है वैसे रिकॉर्डिंग्स आ जाते हैं यहाँ पे, तो मैं उस क्लास का रिकॉर्डिंग देख करके, इवन इफ आई वाज नॉट अवेलेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मैं आकर के रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ कि व्हाट वाज टॉट टू मी। ठीक है, एंड मेरे सारे अपकमिंग क्लासेस मुझे दिखते रहते हैं, टाइमर दिखता रहता है, मैं इस क्लास को अपने कैलेंडर में ऐड कर सकता हूँ, एंड गूगल कैलेंडर विल देन सेंड मी रिमाइंडर दैट योर क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो दीज आर द लाइव क्लासेस दैट आर शेड्यूल्ड डायरेक्टली। ओके, देन देयर इज अ कोहोर्ट लीडर बोर्ड ऑल्सो, जहां पे बेसिकली आपके बैच में जो स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ रहे होंगे उनके साथ आपका रैंक दिखता है कि एट व्हाट रैंक यू आर इन द क्लास। नाउ दिस क्रिएट्स अ कॉम्पिटिटिव वाइब। if you are studying alone, probably you will not have an idea कि how well you are progressing। ठीक है, एंड देन उसके हिसाब से आपको बेसिकली वो सारी चीजें दिखती है कि आपका बेसिकली क्या चल रहा है, किस रैंक पे हो आप, रैंकिंग के रूब्रिक्स दिखते हैं कि कैसे आप रैंकिंग करते हो। तो इट क्रिएट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव वाइब, लाइक अ एक्चुअल कॉलेज, लाइक एन एक्चुअल क्लासरूम। आपको अपडेट्स दिखते रहते हैं कि आपके दोस्तों ने कौन सा क्विज कंप्लीट कर लिया है, कौन सा लेसन कंप्लीट कर लिया। सो ऑल ऑफ दीज आर रियल टाइम कम्युनिटी अपडेट्स दैट यू सी ओवर हियर, राइट? दैट प्रियांशु जस्ट कंप्लीटेड द क्विज डेटा management and schema design. Ajay completed the quiz fundamentals of Excel. So this essentially will also help you trigger that your peers are doing it. They are excelling in this field, and you should also be doing the same. ठीक है, सो दिस इज एसेंशियली आपको अपना रैंक वगैरह दिखते रहता है। ये हो गए क्लासरूम टैब की बात। तो आप यहाँ से क्लासेस अटेंड कर सकते हो, लीडर बोर्ड एक्सेस कर सकते हो, पुराने क्लासेस देख सकते हो, उनका शेड्यूल देख सकते हो। और बहुत सारे क्लासेस में ऐसा होता है कि आपको हैंडआउट्स भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ द क्लास टीचर विल गिव यू
सम नोट्स की, ये लो रेफरेंस मटेरियल, इसे पढ़ लेना, इसे देख लेना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप यहाँ पे हैंडआउट्स भी देख सकते हो कि क्या टीचर ने शेयर किया है। तो दिस इज सम ऑफ द एक्स्ट्रा लर्निंग मटेरियल दैट टीचर्स कीप ऑन शेयरिंग। तो वो चीजें आपको दिख जाती है यहाँ पे, राइट। तो इन अ वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड फॉर्मेट, राइट। सो लर्न टैब में आपको सारा कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में मिल गया, सारे क्लासेस, सारा मॉड्यूल, सब कुछ मिल गया, ठीक है। सेल्फ पेस मोड में आप करना चाहो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। अगर आप मिक्स करना चाहो कि कुछ चीजें आपने सेल्फ पेस्ड में कर ली हैं, कुछ चीजें आपको लाइव क्लासरूम में अटेंड करनी है, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बहुत चीजें कर सकते हो। सो एवरी बैच हैज अ लाइव लाइव क्लास ऑप्शन जो कि शेड्यूल होता है। बट इन केस यू वांट टू मूव एट अ फास्टर पेस, और इन केस यू पार्शियली वांट टू डू सेल्फ स्टडी, कि ठीक है मॉड्यूल 2 मुझे, फॉर एग्जांपल आई एम ऑलरेडी अ डेटा एनालिस्ट और मुझे एसक्यूएल ऑलरेडी आता है, तो मुझे एसक्यूएल के क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ पेस देख करके उसमें आगे बढ़ जाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। उसके क्विजेज और असाइनमेंट्स कर लूंगा। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो दैट वे इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। द आइडिया इज टू गिव यू द राइट इकोसिस्टम, द राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स योर लर्निंग जर्नी, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है यार, मतलब दिस इज वेरी फंडामेंटल दैट यहाँ पे हम स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे पीपल हु आर कमिंग फॉर अपस्किलिंग आर matured people, are people like you and me who want to create a career in data science. The idea is to create a very friendly environment for them, right? To be adaptable in terms of working needs and time requirements of those people, so that you get the best out of this particular thing, ठीक है। फिर अगला आता है प्रैक्टिस टैब। तो अब प्रैक्टिस टैब का के यूएसपीज क्या है वो मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डिफरेंट कंपनीज के जो एक्चुअल रियल इंटरव्यू प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो लिस्टेड होते हैं। और ये आता कैसे है डेटा हमारे पास, तो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मल्टीपल कंपनीज में इंटरव्यू देते रहते हैं। सो वी कीप ऑन अपडेटिंग आवर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डेटाबेस, कोडिंग प्रॉब्लम्स, कोडिंग असेसमेंट्स, क्विज असेसमेंट, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स है, उसको हम अपडेट करते रहते हैं बेसिक डिफरेंट कंपनी रिक्वायरमेंट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल एचसीएल में अभी लास्ट मंथ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, नो वन अदर देन AlmaBetter विल नो दैट बेटर, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी का फिल्टर भी लगा सकते हो, आपने एचसीएल का फिल्टर लगा लिया तो इस टाइप के क्वेश्चंस, रीसेंट क्वेश्चंस आपको हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हो कि किस कंपनी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि ये एक सैंपल क्वेश्चन है, राइट। तो दिस इज दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच इज सिमिलर टू हैकर रैंक और समथिंग, राइट। तो किसी ने तो हैकर रैंक और लीड कोड के बारे में पूछा था, तो वहां पर भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिलते हैं, उनका आप सॉल्यूशन यहीं पे लिख सकते हो, आईडी यहीं पे बिल्ट है, टेस्ट केसेस भी यहीं पर है, आप यहीं पे अपना कोड लिख करके उस कोड को रन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। अगर ये आप सॉल्व करोगे तो इससे आपका पॉइंट बढ़ेगा, जिससे बेसिकली आप लीडर बोर्ड में आगे जाओगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हिंट्स हैं, सबमिशंस हैं, आपने कितने सबमिशंस किए। तो दिस पर्टिकुलर फीचर विच इज लाइक वन ऑफ द फीचर ऑफ AlmaBetter's लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज समथिंग दैट, मतलब लोगों ने इसके ऊपर पूरा वेबसाइट बना रखा है। देयर आर बिजनेसेस दैट आर ऑपरेटिंग ऑन जस्ट वन फीचर दैट वी हैव फॉर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और द एड ऑन इज दैट यहाँ पे मेरे पास कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, राइट। एंड व्हाई, बिकॉज आई हैव माय ओन पूल ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कमिंग बैक एंड इन्फॉर्मिंग AlmaBetter दैट these were the questions that were asked. So that cycle is now continuous, right? So tomorrow if you join AlmaBetter, you will give feedback about questions, then people who will come after you will benefit from that model. So that is like a virtuous cycle, right, that keeps on running. फिर आपने जो सॉल्व किया है, अनसॉल्व किया, वो सब चीजें दिखती है। कोडिंग असेसमेंट में भी आपको यहाँ पे रियल वर्ल्ड कोडिंग असेसमेंट्स दिखते हैं कि एक्सेंचर का कोडिंग प्रॉब्लम ये था जो उनके कोडिंग राउंड में पूछा गया था, क्या हिंट्स हैं, क्या सबमिशंस आपने किए हैं, आप अपना क्वेरी यहाँ पे लिख सकते हो, अपने टेस्ट केसेस रन कर सकते हो, सारे टेस्ट केसेस बिल्ड है जो एक स्टैंडर्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म में बिल्ड होते हैं, राइट। एंड यू कैन एसेंशियली प्रैक्टिस इट ऑन द गो। सो दिस प्रैक्टिस सेक्शन इटसेल्फ इज अ फुल फ्लेजेड वेबसाइट ऑन इट्स ओन, गाइस. So there are websites that are just built on this one feature of ours. Okay, and this is something that I say very proudly because this is something that we are doing exceptionally, and students, alumni are benefiting out of it, and that's why they keep on coming back to AlmaBetter. ठीक है, आपको उबर, एयरटेल, एयरबीएनबी, स्वाइप, रियल वर्ल्ड कोडिंग प्रॉब्लम्स क्या पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से ये डेटाबेस अपडेट होता रहता है। सिमिलरली क्विज असेसमेंट्स, राइट, माइक्रोसॉफ्ट डेटा एनालिस्ट मॉक टेस्ट, राइट, कि यहाँ पे आप एक छोटा सा क्विज है विच इज लाइक एन एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
ठीक है, Cisco, so on and so forth. So the idea is that in this practice tab, you will get an understanding of different things that are happening all around. तो एक और सेक्शन है प्रोजेक्ट सेक्शन. सो अपार्ट फ्रॉम द कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स जो मैंने लर्न सेक्शन में आपको दिखाया कि हर एक मॉड्यूल के बाद आपको एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट तो करना ही पड़ेगा, उसके बियॉन्ड अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, इफ यू वांट टू हैव लाइक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप यहाँ करके और भी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हो. यहाँ पे आकर आप देख सकते हो कैसी चीजें हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, आप उन प्रॉब्लम्स के अराउंड भी कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स कर सकते हो. सो दीज आर ऑल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स दैट एग्जिस्ट ओवर हियर. So this also keeps on getting updated basis new requirements, new data cases, new. So we have a pool of hiring partners, right? बहुत सारी companies है जो हमारे साथ associated है. So they keep on sending us their problems, their data sets, and we keep on appending them in our project list so that our students can get a fair idea of how real world projects look like. Career section mein, I think this talks about the career section on how the journey will look like. This I will cover in the next section when I'll talk about the course structure and fee at AlmaBetter. ठीक है. फिर मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है. तो दिस इज लाइक अ मेंटरशिप प्लेटफॉर्म जहां पे आप जा करके डिफरेंट डिफरेंट चीजों के अराउंड मेंटरशिप सेशंस बुक कर सकते हैं. और मेंटरशिप सेशंस लेते हैं कौन है? योर मेंटर्स विल बी people who are already working as a data scientist. They have 5 years of experience in data scientist. तो आप इंटरव्यू गाइडेंस सेशंस बुक कर सकते हो, जॉब काउंसलिंग सेशंस बुक कर सकते हो, रेज्यूमे गाइडेंस, रेज्यूमे बिल्डिंग सेशंस बुक कर सकते हो, प्रोजेक्ट गाइडेंस, एकेडमिक काउंसलिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आप ऐसे आगे जाकर के बुक करोगे एंड अपने स्लॉट्स वगैरह ऐड करोगे एंड यू कैन बुक इट. नाउ दिस विल एसेंशियली गो लाइव इन आवर मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म जहां पे कोचेस एंड मेंटर्स कैन कम एंड एक्सेप्ट दीज सेशंस. Okay, so they will come and then they accept basis your preferred time and date, and then you can interact with them. आप अपनी doubts पूछ सकते हो, समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू होने वाला है फ्लिपकार्ट में, तो एक मेंटर है जो कि फ्लिपकार्ट में 5 साल से काम कर रहा है, तो आप उससे बात कर सकते हो. यहाँ पे उससे बात कर समझ सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है. बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है कि जो मेंटर्स होते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेफर कर देते हैं अपने कंपनीज में, बिकॉज दे हैव इंटरेक्टेड. नाउ एक पर्सनल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. सो दे विल रेफर यू डायरेक्टली बिकॉज दे नो दैट दिस गाय इज ऑलरेडी अ गुड गाय. मैंने इसका एक मेंटरशिप सेशन लिया था, इसे सही नॉलेज है. एंड दे एसेंशियली हैव इंसेंटिव बिकॉज एवरी कंपनी हैज रेफरल पॉलिसी कि आप सही कैंडिडेट को रेफर करोगे तो आपको रेफरल बोनस मिलेगा. सो दे ऑल्सो हैव इंसेंटिव ऑन दैट फ्रंट एंड दे गेट गुड कैंडिडेट्स फ्रॉम AlmaBetter. That's a win-win deal for them also. So that's why mentorship session has multiple benefits for you, for mentors, for matchmaking, for job prospect also. ठीक है. फिर एक नया फीचर है जो भी हमने लॉन्च किया है विच इज जॉब बोर्ड, जहां पे बेसिकली आपको सारे टेक जॉब्स लिस्टेड दिखते हैं. ठीक है, डेटा साइंस एज वेल एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सारे टेक जॉब्स लिस्टेड दिखते हैं. एंड दिस इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल दी जॉब प्लेटफॉर्म्स. तो आपको लिंक्डइन पे, इंडीड पे, IIT IIM जॉब्स पे, नौकरी पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाने की जरूरत नहीं है. You can come on one this single platform and all the jobs from all these locations will be scraped and listed over here. आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो, अपने जॉब हंट में इस चीज को यूज कर सकते हो, so on and so forth. ठीक है. So this is broadly क्या क्या मतलब what AlmaBetter's learning ecosystem is all about. एक लास्ट चीज है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा which is live support. ठीक है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग अगर क्लास में कुछ पढ़ रहे हो, राइट, प्रोबेबली नॉट एवरीवन इज कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर और आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ 40 पीपल. आपको चाहिए होता है वन ऑन वन पर्सनल सपोर्ट. तो आप यहाँ पे लाइव सपोर्ट में जा सकते हो. सो दिस लाइव सपोर्ट इज एक्टिव 12 to 8 PM एवरी डे. और यहाँ पे देर आर काउंसलर्स एंड देर आर टीचर्स, मेंटर्स, इंस्ट्रक्टर्स हु आर सिटिंग ऑन अ डेली बेसिस फॉर यू टू आंसर योर डाउट. ठीक है. तो आप जाकर के किसी भी टेबल को ज्वाइन कर सकते हो एंड वंस यू ज्वाइन दैट टेबल देयर विल बी एन इंस्ट्रक्टर हु विल कम एंड हेल्प यू, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल, लाइव सपोर्ट. अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, कोई आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम किया, आप उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, सो हाउ विल यू देन गो अबाउट इट. सो दिस इज what is going to help you in sorting those problems on an instantaneous basis, and you don't have to wait for the next class to come and get answers to those queries. ठीक है. I hope I'm clear, guys, till now. Give me a thumbs up if I'm audible and things were clear to you till now. ठीक है.
एक लास्ट चीज है कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। तो बिकॉज यू विल बी पार्ट ऑफ एल्मा बेटर, और इफ यू हैपन टू जॉइन एल्मा बेटर, तो आप एल्मा बेटर कम्युनिटी का भी पार्ट बनोगे। सो दिस कम्युनिटी इज हैविंग स्टूडेंट, सो दिस इज लाइक इंटरनल फेसबुक फॉर एल्मा बेटर। तो जहाँ पे सारे डेटा साइंटिस्ट, इंस्ट्रक्टर्स, कोचेस, मेंटर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड ऑल ऑफ दोज पीपल, सो दिस इज लाइक एन इंटरनल फेसबुक ऑफ एल्मा बेटर, जहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बात करते हो, यू मेक फ्रेंड्स, you network in the domain of data science, because this is something that will going forward, and this community exists for the longer run, right? So हमने यहाँ पे community भी बना रखा है, जहाँ पे you are seeing, right, that there are so many people posting memes, posting things about themselves. So you'll get to be a part of this community. See, someone is asking to evaluate my assignments, right? And there are so many memes, लोग यहाँ पे data science related memes डालते रहते हैं, right? So if you see, this is a chill space, right? Lately it seems like nothing but zeros, and you will see a lot of contextual things also happening. So this is like an internal fun community that Alma Better also has, right? Bros learning Python, see. So that is the kind of things that you see that people enjoy over here. So studying is one aspect, but also continuously engaging with friends, uh, chilling out with the right kind of people also helps you on the longer front also, right? So that is, this is the community space जहाँ पे आप आकर के you can join the, I would say, internal Alma Better Facebook or a data science Facebook, and we have like a lot of people over here. This community has grown significantly, and there are a lot of people who have already got jobs, they have got placed, they are alumni, and they still come back and associate with us over here, and they keep on using this. ठीक है, सो दिस इज इट गाइस फ्रॉम द डैशबोर्ड पर्सपेक्टिव। कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, कोई स्पेसिफिक पार्ट है, तो आई कैन एसेंशियली डिस्कस विद यू। Otherwise, I will move on to the next part, which is course structure and fee. I think now once you guys have an idea of how the data science industry is evolving, what are the different use cases, what are the different technical aspects you need to be a data scientist, to be a data analyst, to have a long term career in data science. अगर वो सब चीजें क्लियर है, तो फिर मैं आपको one last thing that I would quickly brief you guys is on essentially what are the course structure at Alma Better. Let me know if any questions. Give me a thumbs up, guys, if you are on here till. कुछ Q&As हैं. Let me just quickly read through it. ठीक है, I think I have answered most of this. ऐसा कुछ नया तो नहीं दिख रहा है. डेटा साइंस करने से पहले क्या करना, क्या 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 करना होगा? नथिंग, आई थिंक एवरीथिंग दैट, सो आई थिंक अभी जो मैंने आपको मॉड्यूल और कोर्स दिखाया, दैट एनीवेज हैज एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, बहुत ही स्क्रैच से चीजें बिल्ड इन है, एंड आपको कुछ बियॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कर रहे हो, दिस इज गुड इनफ। ठीक है, अगर आप ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, तो पाइथन बेसिक से स्टार्ट कराया जाता है। द कोर्स इज डिजाइन की पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कैन कम एंड बेसिकली हैव द राइट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हम अब अगली चीज पे मूव करते हैं, विच इज कोर्स स्ट्रक्चर एंड फी। तो जो सबसे पहला प्रोग्राम है, और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वाई डेटा साइंस, वाई एल्मा बेटर। बिकॉज हर एक इंस्टीट्यूशन का एक डीएनए होता है, राइट? अगर आप आईआईटी में जाओगे और बोलोगे कि एमबीए मैंने आईआईटी से किया है, तो प्रोबेबली दैट एमबीए विल नॉट होल्ड दैट वैल्यू। ठीक है, कल हो करके अगर आईएम लॉन्चेस इट्स बीटेक कोर्स, देन डू यू थिंक आईएम का बीटेक कोर्स का उतना वैल्यू होगा, राइट? तो every institution has a DNA that they build on, and for Alma Better that DNA is data science. We don't do a lot of courses. आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे जहाँ पे 100 कोर्सेज चल रहे हैं, राइट? आई विल नॉट टेक नेम ऑफ सच एनी कॉम्पिटिटर्स एज ऑफ नाउ, बट आपको दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, डेटा साइंस भी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, लीडरशिप भी करा रहे हैं, एचआर भी करा रहे हैं, आपको एमबीए भी करा दे रहे हैं। वाह, मतलब दे आर डूइंग एवरीथिंग, सब कुछ करा दे रहे हैं। तो फिर व्हाट इज देयर एक्सपर्टीज इन, what is their core knowledge in, what is, how is company how is a particular institution, be it an edtech institution or offline institution, it has to hold true to some of the core things, right? So we at Alma Better are very fundamental to the belief that whatever we do the best. ठीक है, there might be people who might be doing good digital marketing courses, and I don't know how to teach digital marketing course, but I know how to do data science, and that is the USP of Alma Better.
and that is it. That is fundamental approach that we have, that whatever we do, we want to do it the best way, otherwise we don't do it. बहुत ईजी है कि मैं 10 कोर्सेज स्टार्ट कर दूं, मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी करा दूं, डिजिटल मार्केटिंग भी करा दूं, एसईओ भी करा दूं, एचआर भी करवा दूं, लीडरशिप भी करा दूं, एमबीए भी करा दूं. Starting a course or effectively getting students on the name of course is something that we don't want to do at AlmaBetter. We will do a course, we will essentially have a course only if we have the right expertise and we ourselves are confident that this will be a valuable outcome for you. That is a fundamental belief at AlmaBetter. Yes, there are a lot of data science courses available at a lot of platforms that are doing hundred of other things, but AlmaBetter, we do one thing and we do it right, and that's it. As simple as that. ठीक है. Course structure and fee, इस पे आते हैं. So the first course that I will brief you guys on is the full stack data science. आप जाकर के वेबसाइट पे भी कोर्स देख सकते हो. यहाँ पे बस मैंने एक समराइज तरीके से एक्सप्लेन किया है कि what this course is about. ठीक है. So, so this is essentially how a student's career trajectory will look like if he or she joins the full stack data science course, right? So upfront enrollment in full stack data science course has two plans or two options. One is the iconic plan and the second is the premium plan. दोनों में difference क्या है? Iconic plan is essentially the same program but in affiliation with IIT Guwahati. So a few months back, we associated with IIT Guwahati. We've got our curriculum vetted from professors of IIT Guwahati. They jointly created the curriculum with us. And they said that because your curriculum is good enough and you're actually creating value, we would like to associate with you and we can give official IIT Guwahati certifications, which is recognized by Government of India to your students. So we were more than happy with that fact, but obviously that comes at a cost. So there is revenue sharing that happens with IIT Guwahati, and that's why the iconic plan is slightly higher. But it gives a meaningful value add because we also feel that this is something that students don't do on a daily basis. Taking a course is not like buying a t-shirt, right? That you will buy every 6 months. अगले 6 महीने बाद फिर से कुछ और खरीद लेंगे. ऐसा तो नहीं है ना. This is a once in a lifetime investment that students do on their career, on themselves. So for that, we want to create it very valuable, that the recognition that the student is getting after this course, the certification that a student is getting after this course is valued in the broader society and broader construct of things. And that's why we came up with an iconic plan, which is priced at 60,000 plus GST. And it has all the AlmaBetter plus IIT Guwahati benefits, which includes your certification from IIT Guwahati. There is an optional seminar that you can attend at IIT Guwahati. There are some guest lectures that comes from professors from IIT Guwahati, so on and so forth, right? And the idea behind this is just to equip you that this is a once in a lifetime thing. कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी में हर 6 महीने में डेटा साइंस कोर्स ज्वाइन कर रहा है. जिंदगी में लोग एक ही बार करते हैं ये कोर्स, and they should get the right value and right recognition out of it. That's why this plan. In case for people who are not interested in iconic plan and are a little bit budget constrained, for them we are still having our core value proposition जिसमें everything remains same. It's just that the IIT recognition goes out of the picture. So that is the premium plan that is available at 30,000 plus GST. Okay. Some scholarships and all will be available. For that, you will have to connect with your admission counselor and have a chat with them, and they will help you on those front. Okay. EMIs option obviously are available. So not going much into details now. तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रॉडली 2 टाइप के प्लान्स हैं जो आप यूज कर सकते हो फुल स्टैक डेटा साइंस कोर्स में एनरोल करने के लिए. उसके बाद फाउंडेशन ट्रैक होता है 6 महीने का, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि 7 मॉड्यूल्स होते हैं. पहले 4 मॉड्यूल में क्या पढ़ाया जाता है दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो यू विल बी एलिजिबल फॉर रोल्स लाइक डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट, मेंटरशिप्स, करियर गाइडेंस, इन सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. तो जब आप ये कंप्लीट कर लेते हो, कंप्लीट करने के बाद एक एबी कैट एग्जाम होता है विच इज AlmaBetter कॉमन एडमिशन टेस्ट. तो दिस इज लाइक अ वेरी सिंपल एग्जाम जस्ट टू एंश्योर कि आपने जो पढ़ाई करी है दैट इज लेजिट इनफ एंड यू आर नॉलेजेबल इनफ टू एक्चुअली नाउ गो एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स. ठीक है. तो वो आप एग्जाम क्लियर करते हो, इसके आपको मल्टीपल अटेम्प्ट मिलते हैं. अगर आपने डिसेंट पढ़ाई कर रखी है, अगर आपने 70-80% कोर्स भी अच्छे से पढ़ रखा है, तो मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी सी दैट स्टूडेंट्स क्लियर एबी कैट एग्जाम्स इजीली.
The reason for having AB CAT exam is that we don't want non-meritorious students to come and sit for job interviews. We want students who have actually put in effort, who have actually put in their hard work. They should be rewarded, and that's why we have a filter over here, AB CAT exam. तो आप वो क्लियर करते हो, उसके बाद एक इनकम शेयर अग्रीमेंट साइन करते हो. तो दिस इनकम शेयर अग्रीमेंट इज फॉर अ पे आफ्टर प्लेसमेंट फीस. ठीक है. तो करियर सर्विसेज प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप इनकम शेयर अग्रीमेंट साइन करते हो, जिसमें आप कहते हो कि जॉब लगने के बाद जो करियर सर्विस प्रोग्राम की फी है वो मैं पे करूंगा, बट अभी नहीं पे करूंगा, जॉब लगने के बाद करूंगा, वो भी इफ द जॉब इज अबव 5 LPA. ठीक है. So we see that our students get a job between 5 to 25 LPA, but 5 is the lower threshold. अगर किसी का 4.99 का भी जॉब लगता है तो the pay after placement fee becomes ineligible for him or her. ठीक है. Now pay after placement fee are two kinds. अगर आपने आइकॉनिक प्लान ले रखा है which is on a higher plan, तो we kind of compensate for that over here, and the pay after placement fee is only 1,50,000, जो आपको immediately पे नहीं करना है, जो आपको जॉब लगने के बाद 15 महीने में, नेक्स्ट 15 मंथ्स, वंस योर सैलरी स्टार्ट्स कमिंग इन, तब आपको पे करना है 10,000 ईच करके. और उसमें भी बीच में अगर आपका बाई एनी चांस कंपनी अगर शट डाउन हो जाती है, कोई अनफोर्सीन सिचुएशन होता है जहां पे आपका जॉब चला जाता है, तो वो ईएमआई भी पॉज हो जाता है. ओके. प्रीमियम प्लान विच इज 2,40,000. तो अगर आपने 30,000 देके अपफ्रंट एनरोल कर रखा है, तो आपका पे आफ्टर प्लेसमेंट फी 2,40,000 रुपए का होगा, विच विल अगेन बी इक्वली स्प्लिट इन नेक्स्ट 24 EMIs फ्रॉम योर सैलरी एंड इज डिपेंडेंट ऑन सैलरी. सो द पॉइंट इज दैट अगर आपको 8 लाख की जॉब लग जाती है, तो आपकी जो सैलरी के जो 3 महीने की सैलरी है ना, उसमें ही आपका पूरा फीस ब्रेक इवन हो जाता है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. So this is about the placement, pay after placement program. Now the other thing is that this entire thing is optional if you are confident कि आपने फाउंडेशन ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, आपने ये सातों मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं. वहां भी आपको बेसिक सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, रेज्यूमे बिल्डिंग, करियर गाइडेंस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स के अराउंड कुछ कुछ आपके इंटरव्यूज भी करा दिए जाएंगे. प्लस अगर आपने खुद अपना रेज्यूमे बना लिया है या फिर आपका रेज्यूमे बनवा दिया गया है आल्मा बेटर के तरफ से, तो आप खुद में भी अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो. तो आप एलमैक्स में आपको आने की जरूरत भी नहीं है. You can just pay 60,000. You can complete the course, get the IT certification, and by the time you complete the foundation track, आपने प्रोजेक्ट्स कर रखे होंगे, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स कर रखे होंगे, तो आपका काफी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस खुद ही हो गया होगा. So a lot of students also don't opt for the career services program, but they skip joining the Almax career in case they don't require dedicated placement service. So yes, we have a dedicated placement service for all the students, but because it is a dedicated placement service, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना हाई कॉस्ट क्यों है, 1.5 लाख क्यों, 2.5 लाख क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से तैयारी कराई जाती है. आपके साथ एक डेडिकेटेड कोच अलॉट होता है, आपके बहुत सारे मेंटरशिप सेशंस कराए जाते हैं, आपको पर्सनलाइज्ड रेज्यूमे बिल्डिंग कराया जाता है. So if all of these personalized services are coming in picture, so that will have a cost associated with it, right? Because if there is a coach who is a guy who is having 5 years of industry experience, is working as a senior data scientist, and he is guiding you personally every day, so there will be a cost associated with that itself, right? So that's why this is a slightly higher program, but in order to make it convenient, we have kept it in a pay after placement model. So I hope this is clear, guys. ये full stack data science certification program clear है? Give me a thumbs up if it is clear to all of you. Saf is asking what if not complete project at time. Saf, अगर आप किसी तरह से डिले कर दे रहे हो, दैट इज ओके. कुछ पर्सनल इमरजेंसी आ गया, कहीं आप बिजी हो गए, आप 6 महीने का कोर्स 8 महीना में कर लो, 9 महीना में कर लो, दैट इज ओके. बट करना पड़ेगा. इट इज नॉट एन ऑप्शन कि आप प्रोजेक्ट करो ही नहीं. अगर आप प्रोजेक्ट करोगे ही नहीं, तो फिर आप रिक्रूटर को क्या बताओगे? यहाँ पे ये थोड़ी हो रहा है. मतलब इन दिस प्रोग्राम इट इज नॉट दैट यू आर paying the fees and getting the job. You're not paying and buying a job. You're paying for upskilling yourself. आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो आप खुद की कॉम्पिटेंसी बढ़ा रहे हो, आप लाइफ टाइम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए. तो प्रोजेक्ट्स तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा. देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें आपका बस आप फीस देके एनरोल कर लो और आपका जॉब लग जाएगा. नो, फीस देके एनरोल करना इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू टू गेट अ जॉब. उसके बाद आप कितना मेहनत करते हो, कितना खुद को अपस्किल करते हो, कितने अच्छे से प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, ऑल ऑफ दैट इज व्हाट विल एसेंशियली ट्रांसलेट इनटू अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट.
So no weird assumptions guys. मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये कोर्स ज्वाइन करोगे आपको जॉब लग जाएगा. All of that is wrong. It's your hard work, it's your dedication that will take you there. But Alma Better will hold your hand in order to get you there. Will give you the right framework, will give you the right courses, right teachers, right platform to be able to reach there. ठीक है. But at the end of the day, the job will be on your own competency, on your own skill sets, and nothing is a substitution or a shortcut for that. As simple as that. ठीक है. तो ये हो गया हमारा फुल स्टैक डेटा साइंस कोर्स. साई किरण, अल्मा बेटर इज इनफ फॉर डेटा साइंस कोर्स. आपको दिखाया मैंने कितने सारे प्रॉब्लम्स दिखाए. अगर आप इतने सारे प्रॉब्लम्स कर लेते हो, सारे कंपनीज के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्स एट अल्मा बेटर. अगर आप वो कर ले रहे हो तो इट इज मोर देन इनफ. So Appu is asking, if I start from next month, then what's the probability by the end of this year we'll get a job of 7 LPA? Appu, the probability is greater than 92%. Why? Because our placement success rate is 92%. So for me, the straight answer is that the probability of you getting a job of 7 LPA is more than 92% for sure. ठीक है. But contingent to the fact that you are studying in these 7 months, you are completing projects, you are upskilling yourself. आप आज ज्वाइन कर लेते हो, 7 महीना आप सो रहे हो, उसके बाद आके बोलोगे कि जॉब मिल गया मुझे, 7 महीना हो गए, तो भाई नहीं हो पाएगा. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. If you join today and if next 7 months you commit, right, next 6 months you commit that I will study, I will upskill myself, then I can guarantee you that the probability of getting a job is more than 95%, because that is what we have seen statistically happening. Or job nahi lag raha to we are not earning anything, and the model that we have created is so well oriented around result, right? Only if you get a job is when essentially the career services program fee kicks in. साई किरण, आई थिंक आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. आप पूछ रहे हो कि क्या 1 साल का कोर्स मैं 2 महीने में कर सकता हूँ या फिर 2 महीने से और एक्सटेंड कर सकता हूँ. ईदर वे इट इज पॉसिबल. एज आई शोड यू दैट यहाँ पे वी आर नॉट टीचिंग स्कूल के बच्चे यार कि आपको आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है. अगर आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा टाइम है, अगर आप करेंटली अनएम्प्लॉयड हो या फिर करेंटली कहीं काम नहीं कर रहे हो, आप दिन के 6 घंटे लगा सकते हो, तो आप पढ़ो. आप 6 महीने का कोर्स 3 महीने में कंप्लीट कर लो एंड देन स्टार्ट योर जॉब सर्च. कम टू करियर सर्विसेज प्रोग्राम. दैट इज फॉर श्योर, दैट इज गोइंग टू वर्क आउट. अगर आपको लगता है कि आप जॉब कर रहे हो, आपको दिन में 1 घंटे ही दे पा रहे हो, आपको 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करने में 9 महीने लगेगा, नो इश्यूज. दैट ऑल्सो. सो दैट इज द एंटायर flexibility that we have created in this product, right? That working, non-working professionals can optimize basis their personalized needs and still do best in the current setup that they are operating in. Appu is asking, first job that we will get, will it be work from home? No, nothing of that kind. It might or might not be work from home. It mostly, I think, data science or software development fields में मैंने hybrid work culture देखा है. The students that have got placed this month, most of them have been in a hybrid setup जहाँ पे हफ्ते में 2 दिन उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है, 3 दिन घर से काम करते हैं. That is the best case that I am seeing these days. So I'll be very honest, अगर आप 100% वर्क फ्रॉम होम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बहुत कम जॉब ओपनिंग्स आती हैं उस केस में. मोस्टली हाइब्रिड वर्क सेटअप इज व्हाट आई सी दीस डेज. AI will affect data science jobs in future. Sai Kiran, no, that is not going to happen. AI will only improve the quality of data science jobs in future. Why? Why do I say this? Because आने वाले टाइम में क्या होगा कि चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग राइट विल ओनली इक्विप यू to be able to perform more efficiently as a data scientist. So this is something similar to industrial revolution also, right? That when industrial revolution happened, people were essentially thinking कि अब तो humans का requirement नहीं है, अब तो unemployment बढ़ जाएगी, so on and so forth. But that did not happen. What actually happened that the quality of life improved. Instead of 12 hours work culture, 7 days a week work culture, people shifted to 5 days a week, 8 hours, labor laws improved, quality of life improved. So that is how the quality of life will improve.
अप्पू, यू आर आस्किंग नॉर्थ ईस्ट में जॉब ओपनिंग्स आती हैं आल्मा बेटर वाले स्टूडेंट्स की? यार नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम ओपनिंग्स आती हैं, शायद ही मैंने एक दो ओपनिंग सुने विच आर अगेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. सो प्राइमरली ओपनिंग्स आर इन बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, नोएडा. दीज आर द प्लेसेस. सम टीयर टू सिटीज, भुवनेश्वर, भोपाल, इन सब जगह भी हमने सुना है. बट एज सच अगर आप सोच रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट में ही ओपनिंग आ जाएगी, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. थोड़ा सा तो आपको साइलो से बाहर निकलना पड़ेगा. आई थिंक यू आर अ वेरी, आपको वर्क फ्रॉम होम वाली अगर जॉब मिलती है तो सही है, यू कैन कंटिन्यू. अदरवाइज इफ यू वांट टू ग्रो इन 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 लॉन्ग टर्म, राइट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फर्स्ट जॉब, उसके बाद आपको स्विच भी करना है, राइट. आपको फिर 10 लाख की जॉब मिलेगी, फिर आप और स्विच करोगे, फिर आपको 15 लाख की जॉब मिलेगी, फिर 20 लाख, 25 लाख. दैट्स हाउ यू विल ग्रो. So in 5 years, you have to think that you will reach a state where you are earning 25 to 30 lakhs. तो अगर आप उसको पिवट कर दोगे कि मैं नॉर्थ ईस्ट में ही रहूं और वहीं मुझे 30 लाख की जॉब लग जाए, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. You have to break that mental block. If you want to grow in your life, in your career, if you want to reach at a salary of 30 LP in 5 years, then you have to be flexible in terms of location. You have to come out of Northeast, come to Bangalore, come to Hyderabad and work at these places. That will be required because unfortunately, I am not running the government, right? I am not the Prime Minister of India. I can tell you what exactly exists. अभी क्या हो रही है चीजें, उसके हिसाब से the best thing is that you have to adapt to the situation and come to locations that are heavily demanding jobs. Age limit, no age limit, Saf, no age limit as such. ठीक है. अब आते हैं अगले प्रोग्राम पे, विच इज मास्टर्स इन डेटा साइंस एंड एआई. तो हमने सर्टिफिकेशन कर लिया. मास्टर्स इन डेटा साइंस एंड एआई में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले बताया था, राइट, दैट तीन एडवांस चीजें, एडवांस्ड एमएल ऑप्स, डीप लर्निंग, और आपका जो भी एडवांस्ड नॉलेज चाहिए होता है फॉर डेटा साइंटिस्ट, राइट, दैट इज व्हाट एसेंशियली इज कवर्ड एडिशनली ओवर हियर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देयर इज नो पे आफ्टर प्लेसमेंट फी एज सच, बिकॉज दिस इज अ मास्टर्स प्रोग्राम. दिस इज इन एसोसिएशन विथ वुल्फ यूनिवर्सिटी, विच इज एन यूरोपियन यूनिवर्सिटी. ठीक है. और इसमें जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वाले बेनिफिट्स हैं, जो आईआईटी गुवाहाटी का सर्टिफिकेशन है, वो भी इंक्लूडेड है. सो यू विल गेट अ मास्टर्स डिग्री, you will get an IIT certification and all the AlmaBetter benefits. So the price of this program is 2,80,000. ठीक है. इसमें दो ट्रैक्स होते हैं. तो पिछले वाले में जो फाउंडेशन ट्रैक था वो तो होता ही है एज इट इज. उसके अलावा एक एडिशनल स्पेशलाइजेशन ट्रैक होता है जिसमें एडवांस चीजें पढ़ाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल डीप लर्निंग, CNN, RNN, आपका टाइम सीरीज एनालिसिस, ML ऑप्स बताया जाता है, and all of those things, right, that we discussed initially when I was telling you about the three additional things. Why is masters who is masters recommended for? तो अगर आपका आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि मुझे इमिडिएटली जॉब चाहिए, बट उसके बियॉन्ड भी आप सोच रहे हो कि अगला 10 साल मुझे ग्रो करना है, 5 years later आई वांट टू बी अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट. अगर आपका एस्पिरेशन है कि आप अच्छे प्रोडक्ट कंपनीज में, गूगल, मेटा, गुड सॉफ्टवेयर कंपनीज में अगर आप जाना चाहते हो, तो हैविंग एडवांस्ड नॉलेज विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड. एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ग्रो करने के लिए आपको एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको एमएल ऑप्स आना चाहिए, एट स्केल चीजें हैंडल करनी आना चाहिए, टीम लीड बनना चाहते हो आप, सीनियर डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो. सो दैट इज वेयर मास्टर्स डिग्री विल गिव यू एन एज इन लॉन्ग टर्म करियर परस्पेक्टिव. ठीक है. यहाँ पे आपका कोई भी पे आफ्टर प्लेसमेंट फी नहीं होता है. यहाँ पे अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो यू आर बाय डिफॉल्ट assigned all the dedicated placement services that are assigned in the previous certification course after signing ISA. यहाँ पे ISA साइन करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि कोई पे आफ्टर प्लेसमेंट फी होता ही नहीं है. द एंटायर फी इज क्लब्ड अपफ्रंट एंड यहाँ पे आप बेसिकली एल्मैक्स, करियर ट्रैक, रेज्यूमे बिल्डिंग, सब कुछ वही होता है जो वहां होता है. यहाँ पे आपका सैलरी रेंज थोड़ा ज्यादा होता है. एवरेज सैलरी ऑफ मास्टर स्टूडेंट इज 15 LPA बिकॉज आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होती है, एडवांस नॉलेज होता है. So that makes sense, right? It's a logical thing to understand. I don't even need to tell it ki why master student will have slightly higher salary. And then you can get placed at top companies with a salary of 5 to 40 LPA. And effectively आप compare करोगे तो the 2,80,000 अगर वहां से हम compare करें, 2,40,000 was the pay after placement fee and 30,000 was the enrollment fee. So that was 2,70,000. बट उसमें 30,000 ही अपफ्रंट था एंड 2,40,000 वाज पे आफ्टर प्लेसमेंट. बट दैट वाज विदाउट मास्टर्स डिग्री,
without specialization track, and all of those things. यहाँ पे at a similar price range, at a similar fee, at 2,80,000, you are getting the entire master's degree and additional track also. एक और फ्लेक्सिबिलिटी जो यहाँ पे हम देते हैं, सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब जल्दी चाहिए होता है, सो दे वांट टू कंप्लीट द फाउंडेशन ट्रैक एंड गेट अ जॉब एंड देन परस्यू द स्पेशलाइजेशन ट्रैक. सो यहाँ पे हमने जॉब वाला जो ट्रैक है विच इज करियर सर्विसेज प्रोग्राम, एंड जो एडवांस्ड लर्निंग वाला ट्रैक है विच इज योर स्पेशलाइजेशन ट्रैक, वो दोनों इंटरचेंजेबल रखे हैं. सो यू कैन ईदर स्टार्ट फर्स्ट specialization track, complete it, get a master's degree, and then go for a job, or you can first go for a job after completing the foundation track, and job लगने के बाद आप job करते करते parallel में भी master's degree pursue कर सकते हो. So ये flexibility है because a lot of students want to do a master's degree but also get a job first. कुछ लोगों का perspective होता है कि मैं पहले master's degree कर लेता हूँ and then probably I look for a higher job. So depend to person depend करता है, that is okay. So whatever you feel is right, you can decide accordingly and pursue it. So this is broadly about the master's degree program. Any questions on this, guys? Hope this is clear. Can I get some thumbs up? ठीक है. ठीक है, अब आखिरी में मैं आपको कुछ अलुमनाई स्टोरीज दिखाता हूँ. ठीक है, जस्ट 2 minutes गाइज, एंड आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर. वी आर ऑल विल रैप अप द सेशन आफ्टर दिस. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पूछते हैं कि मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूं तो क्या मेरा जॉब लगेगा. सो दीज आर सम रीसेंट सक्सेस स्टोरीज ऑफ आवर स्टूडेंट्स दैट आई वांटेड टू शो यू. निखिल, शिवांक, योतीश, अकील, दीपांकर, these guys were from non technical background और इनका रिसेंटली अभी जॉब लगा है इन डेटा साइंस फील्ड. गैप ईयर्स में भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि मेरा गैप ईयर्स है, राइट, तो मेरा जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, व्हाट विल हैपन, विल आई बी एलिजिबल टू जॉब और नॉट. सो यहाँ पे तो मैं बस सैंपल दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं बट एक स्लाइड में मैं कितना ही स्टोरीज ऐड कर सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पे 10 स्टोरीज ऐड की हैं, 5 नॉन टेक बैकग्राउंड के लिए, 5 गैप ईयर्स वाले स्टोरीज ऐड किए हैं. एक मैं आपको दिखाता भी हूँ. लेट मी जस्ट कॉपी दिस प्रोफाइल. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. इसको मैं लिंक्डइन पे खोलता हूँ. Sorry, my screen is visible, guys. Let me know if you can see my screen. ठीक है. So gap years का मैं I was showing you Mukta, right? So she was one of our master's student. ठीक है. तो she got placed as a junior data analyst. ठीक है. और आप देखोगे तो शी हैड अ करियर ब्रेक ऑफ 4 year 5 months, which is like almost 4.5 years. So she was preparing for UPSC. That's why she took a career break. But unfortunately, UPSC did not work out. Then she joined AlmaBetter, and then she got placed at AlmaBetter. So in case you guys are having similar stories, आप लोगों को लगता है कि शायद हमारा हो ना हो, the idea is to take inspiration from these people. If they can do it, you can do it too. If these guys can do it with gap years, with non-technical background, then what is stopping you from doing it? ठीक है. नो मैटर वेर एवर यू ज्वाइन. आई एम नॉट सेइंग यू ज्वाइन आल्मा बेटर. आप कहीं भी कर रहे हो, लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज गाइज. इफ दे कैन डू इट, व्हाई कांट यू? ठीक है. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन इट. अ लॉट ऑफ पीपल विद गैप ईयर्स हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली प्लेस देम. ठीक है. बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जिनकी नौकरी लगी है. So we have like a whole pool of freshers also who are actively seeking out jobs. So we have Avinash, Sanket, Virender, all of these guys have placed, and they were fresher. It is their first time job. They just graduated in college. Some of them were in their final year of study when they joined AlmaBetter. बहुत सारे experienced लोग हैं जो already काम कर रहे थे. They were working at different companies. They were working at different roles. Some of them were in sales profile. Some of them were in QA profile, and they wanted to migrate to data science. So all of them have been able to secure different opportunities at different places. And all of them are very recent stories, guys. All of them are like very recent stories that I wanted to tell you guys. So that's it. That's it mostly, guys, from my end. This is what I wanted to share with you. I hope you guys have like a fair understanding of how data science career strategy looks like in the long run.
Krishna, meanwhile, I think you can run a poll. Let us know. I think if you are interested in whichever course, do give a thumbs up. The admission counselor team will try to get in touch with you. I understand that a lot of you might have some very personal queries, and the questions will be very personal to all of you. Don't worry. Just give a thumbs up, or basically just choose the right program that you're interested in, and the right admission counselor specific to that program will reach out to you, will try to understand your problem and get in touch with you. ठीक है. I think that's all, guys. I think really great having you guys all on this session. I hope this was meaningful for you. No matter whichever place you want to decide, but do think of a career in data science. Whichever organization, whichever institution, that doesn't matter. But it is a growing field. It is a field that is currently being evolved, and from a career perspective, take the right decision for you. Don't have a biased approach towards anything. Try to look out for unbiased government data, unbiased articles from government organizations, both Indian and global, to get a view of what they are telling. How is this field going to evolve? Don't just believe any private firms' words, right? Because they might be biased towards them. I don't want to do that. I would want you guys to make a conscious decision after having a very unbiased approach, that whether this is the right thing for you or not. Great. So I think that's it, guys. Let me see if any other questions. Iconic plan with Alma X will be, yes, Shivangi. 60,000 will be the upfront fee, and 1,50,000 is the pay after placement fee, which you have to pay after getting a job of at least 5 LPA in 15 equal EMIs. When we need to choose the Almax plan. So, Shivani, you are choosing the iconic or the premium plan at the very start of it. And once you complete the course, you are eligible to enter into Almax. And then the Almax fee, which is pay after placement fee, is decided basis which plan you opted for while joining the course. So, if you chose an iconic plan, you will be essentially paying 1,50,000 as a pay after placement fee, which is in EMIs. If you have chosen the premium plan, which is at 30,000 upfront, for that the pay after placement fee will be 2,40,000. I hope that answers your query. Which industry will be better to work, Shankar? Uh, that depends. I think, as I told you, right? So data science today is a field that is equivalent to marketing sales. Will you ask that which industry will be good to work as a marketing guy? No, every industry requires marketing, every industry requires sale. So similar is data science. Every industry requires data science these days. It is not something that is very industry specific. Healthcare, fintech, retail, everything requires data science. Which industry will be better for you is depending on which industry interests you. For example, if you're a supply chain guy, then probably an e-commerce industry will suit you better. If you're a finance guy, then a fintech industry will better, so on and so forth. सर VBA is essential for data analyst. VBA आपको basic knowledge होना जरूरी है, but actually because the scale of data has gone up so much these days, that people generally avoid VBA. They work on heavier tools like Python, or they will be working on Python, NumPy, Tableau, Power BI. So VBA is not very critical, to be honest, because it has outdated the use case that it used to serve. But still, at AlmaBetter, you'll get an understanding of VBA also, how to use Google spreadsheets, Excel, so on and so forth. Non-tech background or career gap of 4 years, which course will you suggest? See, if you have a non-tech background, then definitely getting a technical degree will help. So if you're a non-BTech student, then getting a master's degree in CS will essentially move you towards the technical aspect. So for that case, master's will be recommended. Appu is asking, what's the chances that after course I'll be assigned as a data scientist and not a data analyst? That depends on your competency, Appu. As I told you, right, that if you complete the first 5 modules only, and if you're competent and confident on that, then you're eligible for a data analyst role. Whereas if you also go ahead and cover intro to machine learning, which is module 6, 7, and also the deep learning part, which is in the master's course,
then obviously data scientist will be the right fit for you. So the probability of getting a data scientist role will be better in that case. Great, guys. I think then that's all. I think I'm wrapping up the session. Thank you, all of you, for joining in. Thank you for time. I hope today's session helped you get a perspective of data science industry and its evolution in general. And I wish all of you all the best for your future. Make the right decision for yourself, and learn from stories, and learn from other people who have been able to do so. If they can do it, why can't you? And I think today is the best time to actually take that decision and actually try and make it like once in a lifetime effort to actually upskill yourself and move into the domain of data science if you're actually willing to do that. So great. Thank you all of you for joining in. Wrapping up the session. Thank you, guys. Thank you so much for everything.